One of the most basic topics of lesson number 2 polynomials is finding zeros. Now this is a new word for you. In 8th standard, you had a lot of algebra, x, y, x plus y whole square, a plus b whole square, etc. And that is algebra. This is also a part of algebra. And it's very easy to understand what is a zero. Let me define it in my own words. Zero is a special value of x. Special value of x means x is equal to 2 or x is equal to minus 1 by 3 or x is equal to 54. Anything. It's a special value of x such that when p of x, meaning p of 2, p of minus 1 by 3, p of 54, answer is always 0. The word 0 comes because when you put this value in the equation, your answer is always 0. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल. Linear polynomial means having only x and not having x square, x cube, x4, anything else. और लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल हो, इट इज इंडिकेटेड लाइक दिस. पॉलिनोमियल इन द लैंग्वेज ऑफ एक्स इज x minus 3. This is a polynomial. Now to find zeros, let x is equal to 1. तो पॉलिनोमियल में x की जगह 1 हो गया, यहां पे भी 1 हो गया. रिजल्ट इज -2. Let x is equal to 2. So p of 2 is 2 minus 3 minus 1. Let x is equal to 3. P of 3 is 0. Let x is equal to 4. 1. Among all this, you can see that here the answer is 0. That makes this entire case special, and this makes the value 3 as the 0 of polynomial. That's called 0, a special value of x. x की जगह पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस, रूट्स, डेसिमल्स में कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, कुछ भी. बट 0 हर बार नहीं आएगा, कभी कभी आएगा. और जब 0 आएगा वो स्पेशल नंबर को बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. दिस वाज वेरी इजी, एनीबडी कुड हैव गेस्ड. थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं, खुद ट्राई करना गेस करने की. पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3x minus 4. जीरोस फाइंड करते हैं. लेट x इज इक्वल टू 1. p of 1 is 3 into 1 minus 4 minus 1. नहीं आया. Let x is equal to 2. p of 2 is 3 into 2 minus 4. Answer 2. Let x is equal to minus 1. तो p of minus 1 is 3 minus 1 minus 4. नहीं आया. ऐसे तो रात हो जाएगी. कब तक ट्राई करते रहेंगे? और मुझे ट्रिक पता है, इसलिए मुझे आंसर पता है. लेट x इज इक्वल टू 4/3. सो p ऑफ 4/3 इज 3x minus 4. x की जगह पे 4/3, 3 3 कट, बचा 4 minus 4 0. I got answer 0. Therefore I got the special value 4/3. x is equal to 4/3 is a 0. तो आप कहोगे कि ऐसे तो कैसे चलेगा? There has to be some method. You cannot just put
keep putting values and find the zero. Yes, there is a method and there is a trick, and I will do 5 sums और आराम से वो ट्रिक समझ में आ जाएगी. Remember, this trick is for linear polynomials. Linear polynomial का मतलब having only x. 3x minus 6, 2x plus 10, x minus 3, 4x plus 7, simply 10x. These are 4 linear equations, and we are learning here find zeros. That's the topic. It's a 1 mark question, very easy. Method देखना, ये एक लाइन में खत्म हो जाता है, इतना इजी सम होता है. Let the polynomial be equal to 0. Polynomial है क्या? 3x minus 6. Therefore 3x minus 6 is 0. -6 को सामने ले जाओ. Therefore 3x is equal to 6. 3 को डिवाइड कर दो. Therefore x is equal to 6 by 3, 2. मिल गया 0. The magic value of x when you put inside the equation 3 2s are 6, 6 minus 6, 0. फिर से एक बार देखो, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप let px is equal to 0. Therefore 2x plus 10 is equal to 0. Therefore 2x is equal to minus 10. Therefore x is equal to minus 10 upon 2, minus 5. Let px is equal to 0. Therefore x minus 3 is equal to 0. minus 3 सामने चला गया. कहाँ डिफिकल्ट है ये? It is so easy. All you have to do is send all the numbers on the opposite side and find the special value of x, which is called 0 of the polynomial. Answer negative, positive, fraction, decimal सब आ सकता है, लेकिन याद रखना पॉलिनोमियल में डेसिमल आंसर्स आर नॉट नेसेसरी. -7/4 को डेसिमल करना ही मत. ऑल आंसर हैव टू बी इन फ्रैक्शन. इनफैक्ट डेसिमल आंसर आए तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना. दिस इज स्लाइटली स्पेशल केस. लेट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 0. 10 मल्टीप्लाई में है x के साथ तो सामने जाएगा तो डिवाइड होगा, एंड 0 अपॉन 10 इज 0. So this is the zeros of the individual polynomial. 0 is the 0 of this polynomial. Now looking at the second part, which is finding zeros for quadratic polynomial. So as of now what we have done is linear polynomial which has only x in it. Now we'll see how to find out zeros of quadratic polynomial. Now quadratic looks like a dangerous word, but it simply means equation which has an x square in it. x cube भी नहीं, x4 भी नहीं, x square होना ज़रूरी है. And we'll learn how to find zeros. Now you'll be surprised and happy to know that this is nothing but what we have learned already in 8th standard. Hundreds of sums were done, whoever were there with me, of middle term splitting. तो ये middle term splitting ही है. Therefore you are not going to find it difficult अगर तुमने 8th में सही से सीख लिया है. But still, I am going to teach right now as if you don't know anything. So I am going to go slow so that everybody in our batch can learn, whoever were not with us in 8th standard. Sum number 1, let the polynomial be x square plus 7x plus 12. The procedure is same. Let px is equal to 0. Therefore, x square plus 7x plus 12 is equal to 0.
Now I'll teach you middle term splitting. The first step of middle term splitting is the first term has to be chosen, जो x square के बाजू में है 1, and the last term has to be chosen, which is 12, and multiply them. Split 12. 12 can be split in many varieties. The simplest is 1 12za. Then it will be 2 6za and 3 4za. And now you have to think that 7 कहाँ आता है. So 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4 में 7 आता है 3 और 4 वाले पेयर में. You have to choose 3 and 4 and split the middle term 7x into 3x and 4x. So x square plus 4x plus 3x plus 12 is equal to 0. Underline, underline and start taking common. X common x plus 4 plus 3 common x plus 4. x plus 4 compulsorily same होना चाहिए और बचा x plus 3. You'll be wondering इसमें नया क्या है? कुछ नहीं है. The red box which I have just made, this is 8th standard. 4 स्टेप में आंसर लाते थे, तो साइड का डेकोरेशन इज द ओनली न्यू थिंग इन 9th स्टैंडर्ड. Let's continue. After factorizing it or finding factors, you have to say first factor is equal to 0, second factor is equal to 0. जो दो ब्रैकेट है is equal to 0 करो, 4 को सामने ले जाओ, 3 को सामने ले जाओ. Suddenly you have obtained two values of x. और हम यही सीख रहे हैं how to find the magical values of x so that when you put it in the polynomial you get a 0. सारे लीनियर इक्वेशंस में सिंगल जीरो आता है, बट सारे क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज आएंगे, याद रखना. फिर वो सेम हो के अलग हो, 2 जीरोज आएंगे. टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, let the polynomial be x square minus 5x minus 14. Procedure remains the same. Let is the first word which you have to start with. Let polynomial is equal to 0. Therefore, x square minus 5x minus 14 is equal to 0. Now we'll start learning middle term splitting once again. x square के बाजू में 1 है और last term minus 14. So 1 into minus 14 is minus 14, and let's try to split minus 14. 1 14s are 14, 2 7s are 14. अब minus 14 लाना है, तो कहीं तो माइनस की साइन लानी पड़ेगी. Let's put a minus next to 1 and 2. तो अब मल्टीप्लीकेशन परफेक्ट सेट हो गया. Let's search for minus 5. minus 5 के लिए -2 और 7 काफ़ी नहीं है, क्योंकि -2 and 7 give me a 5. So what I'll do is change the negativity to 7. माइनस की साइन 7 को दे दो, तो अब स्प्लिटिंग परफेक्ट हो गया. x square plus 2x minus 7x minus 14 is equal to 0. Underline, take common. Underline, take the negative sign outside. -7 कॉमन लो, आएगा x plus 2 is equal to 0. Therefore the two factors are is equal to 0 भूलना मत, साइड में therefore भूलना मत. Therefore the first factor is equal to 0 and second factor is equal to 0. 2 सामने -2 और -7 सामने 7. Now we'll take one more example. Let the polynomial be 3x square minus 2x minus 8. Let px is equal to 0. Therefore, 3x square minus 2x minus 8 is equal to 0. First term is 3 and last term is -8.
Multiply them. 3 into minus 8 is minus 24 and try to split 24. 124 za is the first basic option. Then 2 12 za, 3 8 za and 4 6 za. बट 24 तो माइनस चाहिए, तो माइनस की साइन लगानी पड़ेगी, और 2 चाहिए। 24 और 1 में 2 नहीं आएगा, 12 और 2 में 10 आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 आएगा 4 और 6 में। 6 माइनस 4 2 हो सकता है, 4 माइनस 6 माइनस 2 हो सकता है। तो सोच समझ के यू हैव टू पुट द नेगेटिव साइन। माइनस 2 चाहिए, माइनस 6 कर दो, सो दैट बोथ आर सेटिस्फाइड। 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24 हो गया, एंड 4 इंटू माइनस 6 माइनस 2 भी हो गया, माइनस 2। लेट्स स्प्लिट 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8। अंडरलाइन द फर्स्ट टू टर्म्स एंड टेक 3x कॉमन, बचा x माइनस 2 प्लस 4 कॉमन, बचा x माइनस 2। x माइनस 2 हमेशा सेम होना चाहिए। 3x plus 4 is equal to 0. And the last part, the first factor x minus 2 is equal to 0 and second factor 3x plus 4 is equal to 0. Minus 2 सामने जाएगा, x is equal to 2 और 4 सामने जाएगा, minus 4, 3 डिवाइड होगा, minus 4 by 3 are the two zeros of the polynomial.